I'll tell you first about SLS Noida interviews which are going on. Okay, देखो, I think there are two people taking the interview. दो लोगों का पैनल है. इंटरव्यू में they are randomly asking you a lot of GK. ठीक है, इस चीज का याद रखना. Okay, and it is okay if you answer all the questions, but do not be mute. एकदम चुप मत हो जाना. So I'll tell you two questions. ठीक है, which were asked. Okay. Uh, all the names of all the prime ministers from the beginning till the end, and same for president. ठीक है, स्टार्ट से एंड तक प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के नाम पूछे गए थे. Obviously, तो she obviously tried her best, named a couple of them also. Then they went to the CV. Okay, then asked about a couple of things on the CV, मतलब about the co-curricular activities पे उनका काफी फोकस है. ठीक है, अगर आपके सीवी पे को करिकुलर एक्टिविटीज है तो दे विल आस्क यू अबाउट द को करिकुलर एक्टिविटीज यू हैव पिक्ड अप. अगर कम है तो वो पूछेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज कम क्यों है. ओके, सो यू विल हैव टू जस्टिफाई ऑल ऑफ दिस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट डू नॉट गेट स्टार्टल्ड. मैं पहले बता रहा हूँ, दे विल आस्क यू रैंडम जीके. दे विल आस्क यू रैंडम जीके. If you are not sure of your answer, just tell them that you are not sure of the answer, but you think this is the answer. One way of saying it. Second way, अगर जैसे कोई जेनरिक क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ दे आर आस्किंग कि सारे पीएम का नाम बताओ, तो ऑब्वियसली जितना पता है उतना बता दोगे आप. ओके, यू कैन लाइक यू हैव टू टेल देम कि ओके, maybe you will not get the order right, or maybe you will not get all of them right, but you will try your best, and then you go ahead and basically tell them whatever you know. Okay, ठीक है. कोई अब स्पेसिफिक क्वेश्चंस इंटरव्यू के हैं तो पूछना स्टार्ट करो, डाउट्स जो है पूछना स्टार्ट करो. आफ्टर दैट आई विल आस्क यू कि प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस, कंसिडर मी अ स्टूडेंट गिविंग एन इंटरव्यू, एंड डॉज क्वेश्चंस ऑन मी. मेरे पे क्वेश्चंस फेंकना चालू करना, बट पहले डाउट्स क्लियर कर लो आप इंटरव्यू के. ओके, ड्रेस कोड मैं बता देता हूँ. ड्रेस कोड प्लीज बी इन फॉर्मल्स. ओके, नो नीड टू वेयर ब्लेजर्स, बट वेयर अ शर्ट. And especially for boys, please wear a tie if possible. Make sure that you are sitting in a well lit room. नेचुरल लाइट होनी बहुत जरूरी है. नेचुरल लाइट रहे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है. ओके, एंड बिल्कुल नॉइज नहीं होनी चाहिए. बैकअप देख लेना अच्छे से हो. यू आर यू आई होप यू हैव टेस्टेड योर डिवाइस जिससे इंटरव्यू दोगे. आपने वॉइस और कैमरा दोनों चेक कर लिया है इस चीज के लिए, और आपने चेक कर लिया है कि आप जहां बैठे हो वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर है. योर वाईफाई इज कनेक्टेड टू, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एन इन्वर्टर और अ जनरेटर और पावर बैकअप, ताकि बीच में इंटरव्यू के टाइम पे आपकी इंटरनेट कनेक्शन ना लॉस्ट हो जाए. सो ये कुछ प्रिकॉशन मेजर्स है जो आपको लेने हैं. ओके, नाउ यू कैन आस्क मी डाउट्स about interviews, and you can ask me questions about the interview. Yes, Mrinali. Good evening, sir. Good Sir, evening. you did give us a introduction format, but I'm little confused as to what more can I add to it. So could you just revamp it again? ठीक है, देखो इंटरव्यू में ऑब्वियसली यू स्टार्ट विथ दे एक्सपेक्ट. आई थिंक इट्स वेरी ऑड कि हाय माय नेम इज मृणाली बोलना, बिकॉज दे लिटरली नो योर नेम, राइट? बट आई थिंक इट्स अ कॉमन फॉर्मेट, तो आई थिंक यू विल गो विद दिस. हाय, हेलो, you can address them obviously, uh, hello all, or hello interviewers, good afternoon, good evening, whatever you want to say. Okay, ये एकदम मीटिंग स्टार्ट होते समय बोल देना गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. ओके, एंड देन विश करते जैसे ही मीटिंग आपकी स्टार्ट होगी, जस्ट विश देम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एंड लेट देम स्पीक. दे विल ऑब्वियसली, तो मैं बता रहा हूँ कॉन्वर्सेशन कैसे होगा. यू विल स्टार्ट द मीटिंग. ठीक है, दे विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. यू विल फर्स्ट विश देम गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, वट एवर, एंड देन यू विल टेक अ पॉज. You will wait for them to speak, and they will then ask you कि they will obviously either call you by your name. They say, hi Mrinali, how are you, all everything. So you will say, I'm doing well, sir. How about you all, sir and ma'am, and try to address both of the people. ठीक है, एक इंटरव्यूअर पे स्पेसिफिक अटेंशन मत देना. And then they will say कि please tell us about a bit about yourself, right?
So then you will not tell कि, hi, my name is Rali, because they literally addressed you with your name. तो आप नाम नहीं बोलोगे, आप you will start with sir, I belong from this city, ma'am, I belong from this city, and we are a family of these many people. My father does this, my mother does this. I also have an elder sibling who is studying, for example, medical, or who is studying in this college medical. And then you will tell them about, okay, some hobbies of yours, and then you will take a pause. इसके आगे मत बोलना, बहुत लंबा इंट्रो मत खींचना. इंट्रो का मतलब है दे वांट टू नो कहाँ से आप आते हो, ओके, about your family and about your hobbies. So yourself, your family and your hobbies, इन तीन headings को cover करना, and take a pause and wait for them to ask a question. If they want to ask a follow up question, कि okay, what about your schooling, what about this, what about that, so just give them the opportunity to ask question. Okay, be very very. होता क्या है ना, कई बार मैं बता रहा हूँ. Let me turn on my camera. ठीक है, एक second. Now, yeah, I think all of you can see me. So होता क्या है ना, sometimes I'm trying to speak, okay, you are also able to see me, and you have to read the expression of the interviewer. Is the interviewer trying to stop you and ask question? So it will happen like, ऐसे मैं चुप होके सुन रहा हूँ, ऐसे कुछ किया ना मैंने, बस तुरंत चुप हो जाना, तुरंत रुक जाना, सर और मैम, या beg a pardon, were you speaking or asking anything? And just tell them कि okay, you have acknowledged कि they are trying to ask something. कुछ follow up question पूछना चाह रहे हैं, तुरंत रुक जाओ. ठीक है? If you can see they are trying to ask questions, stop there, and they might ask a follow up question. But intro में obviously start with, if they have addressed you with your name, you don't have to say hi, my name is Brunali. But अगर उन्होंने आपका नाम नहीं लिया है, then you will start with introduction, and you will start with good evening, sirs and ma'am. Sir and ma'am, my name is Mrinali, और मैम एंड सर करना हमेशा. ठीक है, सर एंड मैम नहीं करना, मैम एंड सर करना, अगर देयर इज अ मेल एंड अ फीमेल सिटिंग ऑन द पैनल, तो मैम एंड सर एड्रेस करना. माय नेम इज मृणाली एंड आई hail from the city of this. We are a family of these many people. My father has this background, my mother has this background. So every sentence के बीच में pause लेना is also important. And then you can tell about my siblings does do this, okay? And you have just cleared your 12th का exam, and a couple of hobbies of mine are these things. And यहाँ के बाद यहाँ पर आपको दिखना चालू हो जाएगा कि if the interview is trying to ask you questions. So be wary of this. ओके, आप जब अपने बारे में बता रहे हो, फैमिली के बारे में बता रहे हो, ट्रस्ट मी, इंटरव्यूअर विल नॉट ट्राई टू स्टॉप यू देयर. बट जब आप हॉबीज बताना स्टार्ट करोगे या हॉबीज बता दोगे, देन इंटरव्यूअर विल ट्राई टू आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चन. बी वेरी ऑफ दिस, एंड दिस इज हाउ योर इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन विल गो. राइट? यस, हर्षिता, यस. Thank you, sir. नो वरीज, नो वरीज. Yeah. यस, हर्षिता. So I was asking these children who gave the Noida interview today or yesterday or today. So they told me that the questions, some of the questions जीके. were very similar on GK, like the अरे मैं United बता रहा हूँ. Nations हाँ Article हाँ, आई थिंक 370. ही जॉइन लेट. Oh, I joined at 9 3, I guess. हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि वन ऑफ माय स्टूडेंट्स आल्सो गेव द नोएडा इंटरव्यू. उन काफी रैंडम जीके पूछा जा रहा है. ठीक है, इट्स Yes. ओके. डू नॉट, मैं वही बोल रहा हूँ कि डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ जीके क्वेश्चंस. दे रियली डोंट केयर अबाउट टफ जीके क्वेश्चंस. कोई बेसिक जीके क्वेश्चन है ना, वो मत मिस कर देना. ठीक है, दे Mhm. ओनली विल फोकस ऑन हाउ मच यू आर एबल टू आंसर इन अ प्रेशर एनवायरमेंट. तो मैं अगर आपसे पूछ दूं, फॉर एग्जाम्पल, हु इज द हेड ऑफ पैलेस्टीन? No, I'm not aware. एग्जैक्टली. अब ये खराब इंप्रेशन आएगा, ऐसा हम नॉट अवेयर करोगे ना. सो दिस इज Mm. व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. ओके, सो Uh, यू विल हैव टू बी वेरी आर्टिकुलेट. यू हैव टू टेक अ पॉज, take a moment and say कि I'm not sure of the answer, or I beg your pardon, I'm not aware of that answer.
very But politely, I'm बिना sure उसके। about the answer, but I know it, like I have a name which can be the answer. So can I say that तो name? यस, दैट इज व्हाट आई सेड कि अगर आपको लगता है कि आपके पास आंसर है तो यू कैन से आई एम नॉट श्योर बट आई फील सर दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay. ठीक है, दिस इज हाउ यू ट्राई टू आंसर। इफ यू आर एकदम ब्लैंक तो जस्ट बी पोलाइट एंड टेल देम कि आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द आंसर और आई बेग योर पार्डन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस आंसर। ओके And एंड so, दैट। what if they ask your opinion on a certain GK question? Like, for instance, if they ask your opinion on Article 370 getting abrogated, or हाँ, एक सेकंड रुक जाओ हर्षिता, रुक जाओ। हाँ, ये करेंगे हम लोग, ठीक है। बी प्रिपेयर योर क्वेश्चंस एंड आस्क मी दीस क्वेश्चंस, आई विल आंसर। जैसे मैं स्टूडेंट आंसर करता है ना, जैसे मैं स्टूडेंट की तरह आंसर करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये क्वेश्चन याद रखना, मुझसे पूछना, मैं आंसर करूंगा कैसे करना है। सम ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर आई विल नो, सम ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर आई विल नॉट नो ऑब्वियसली। तो आई विल टेल यू हाउ टू आंसर सच क्वेश्चंस। बट कोई जेनेरिक डाउट है इंटरव्यू को लेकर तो पूछ लो पहले। सेटअप मैंने बता दिया, डिवाइस का सेटअप आपको बता दिया मैंने, आपको ड्रेस कोड बता दिया मैंने, थोड़ा मैनरिज्म बता दिए कि ज्वाइन करते तुरंत उनको विश करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ओके, एंड देन विश, आफ्टर विशिंग देम वेट फॉर देम टू स्पीक। So they will most likely tell you to introduce yourself and then you start with the introduction. Okay. एन इंटरव्यू देखो ऑब्जेक्टिवली इंटरव्यूअर भी दो पार्ट में डिवाइड करता है, जीके एंड एचआर। एचआर में आपके सीवी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी गोल्स एस्पिरेशंस, आपने जो जो चीजें की हैं स्कूल में, उन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सो एचआर मेसअप नहीं करना। जीके अगर नहीं भी आता है दैट्स ओके, बट डू नॉट गेट वेरी परप्लेक्स्ड, डू नॉट बी लाइक ऐसे। ये नहीं दिखना चाहिए उनको कि यू आर कंफ्यूज एंड यू आर नॉट एबल टू गैदर योरसेल्फ। इफ यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम नॉडिंग, आई एम टेलिंग देम कि ओके आई एम लिसनिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है, आई एम कॉन्स्टेंटली नॉडिंग, यस यस, ओके ओके। दे स्टॉप स्पीकिंग, sir, I'm not really sure of the answer, but I would still try to attempt. I think, in my opinion, answer is this. ऐसे आंसर करना है काम एंड कंपोज मैनर में। दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो क्या आप कर रहे हो, ऊपर देख रहे हो, छत पे देख रहे हो? नो, नन ऑफ दिस। ओके। मैनरिज्म्स दे विल वेरी वेरी क्लियरली स्क्रूटनाइज, दिस इज वन। एंड सेकंड, एचआर क्वेश्चंस में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आंसर करना है। सो इफ दे आस्क व्हाई एसएलएस नोएडा और व्हाई एसएलएस पुणे, हैव यू गिवन क्लैट, क्या रैंक आई क्लैट में, क्लैट में क्या प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। या दे डू दैट, दे डू दैट, दे मेक इट वेरी कंफर्टेबल। आस्क, हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे पूछना, आप सारे क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। आई ऑल्सो हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर, आई हैव ऑल्सो हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ईयर। दो क्वेश्चन जैसे मैंने डिस्कस किए थे आपके, है ना। एक सेकेंड, व्हाट हैपेंस। एक दो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे कि उन्होंने लिटरली पूछ लिया था, सारे प्राइम इंडिया के सारे प्राइम मिनिस्टर्स का और प्रेसिडेंट्स का नाम बताओ इन ऑर्डर। So obviously you will try your best there, right? ठीक है। Any other questions, general questions or regarding interviews? Any general questions, general queries? And please, end of the interview, uh, please thank them because they have given their time to conduct your interview. So thank them for giving their time to this interview. ठीक है। थैंक यू सर एंड मैम, थैंक यू मैम एंड सर फॉर गिविंग दिस योर प्रेशियस टाइम टू कंडक्ट माई इंटरव्यू। आई रियली अप्रिशिएट इट। ऐसा करके एंड करना है आपको इंटरव्यू। एब्रप्ट फैशन में इंटरव्यू मत एंड करना, बिकॉज जस्ट दिस सिंगल लाइन विल गिव यू अ ब्राउनी पॉइंट, ठीक है। 27-20, अगर 25-26 है तो वो तुरंत 27-28 इस लाइन के ऐड करने से हो जाएगा। दैट यू आर बीइंग कंसिडरेट एंड यू आर थैंकिंग द इंटरव्यूअर्स फॉर टेकिंग द टाइम टू इंटरव्यू यू। ओके। तो ये तो मैनरिज्म्स हमने डिस्कस कर लिए। अब मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ लो। नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड आई आंसर देम। ओके। कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे पता होगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता होगा। या इट कैन रेंज फ्रॉम 15 टू सम। अगर देखो डिपेंड करता है, कुछ कुछ इंटरव्यूज, अब देखो होता क्या है ना, इंटरव्यूअर्स का क्या होता है, दो इंटरव्यूअर्स होते हैं। यस, जस्ट अ सेकंड शिविका। देखो दो इंटरव्यूअर्स होते हैं, उनको बोला जाता है कि आपके पास 15 लोगों का इंटरव्यू का सीवी भेज रहे हैं हम, ठीक है। तीन
हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो देयर फेवरेट टॉपिक, आई टोल्ड यू दिस, कॉन्स्टिट्यूशन तो भर के क्वेश्चन आएंगे। सो अंडरस्टैंड दिस। अब मान लो दो इंटरव्यूअर्स है, उनको बोला गया आपके पास 2 घंटे हैं और आपको मैं 10 CV भेज रही हूँ, 10 लोगों का आपको इंटरव्यू लेना है, सो 5 people इन एन आवर। अब मान लो 4 लोगों का इंटरव्यू 40 मिनट में खत्म हो गया, जो पांचवा होगा उसका 20 मिनट चला जाएगा। ओके, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। बाकी लोगों का इंटरव्यू छोटा होगा तो हो सकता है आपका लंबा खिंच जाए। सो एक्सपेक्ट योर इंटरव्यू टू रेंज बिटवीन 15 to 30 minutes। ओके, expect a lot of question on constitution, expect a lot of question on polity। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जिन्होंने MHCT दिया है, अगेन आई होप दैट एग्जाम हैज बेनिफिटेड यू विथ रिगार्ड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। मैंने आर्टिकल की जो लिस्ट भेजी थी टेलीग्राम चैनल पे, गो थ्रू दैट आर्टिकल लिस्ट। मैंने जो ओलेट के पॉलिटी के नोट्स भेजे थे, जैन फेब मार्च अप्रैल, ऊपर स्क्रॉल करके देखना। ठीक है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ओलेट के नोट्स पढ़ लेना आप लोग। ओके, एंड जजमेंट्स की लिंक भेजी थी मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर से, ऑल द रिसेंट जजमेंट्स, वो सारे लिंक पढ़ लेना ऊपर ऊपर से। कुछ रटना नहीं है उसमें से, जजमेंट वाली चीजों से कुछ रटना नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू शुड नो कि दीज काइंड ऑफ जजमेंट्स हैव कम विद इन द पास्ट 3 to 4 months। ओके, दे हैव लिटरली आस्क्ड पीपल ओपिनियन अबाउट द ट्रिपल तलाक। हिजाब वाले जजमेंट पे ओपिनियन पूछा है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस हिजाब जजमेंट। को करिकुलर्स में पूछा है कि अच्छा डाइवर्सिटी के लिए आप कॉलेज में क्या करोगे। ठीक है, अगर आपको डाइवर्सिटी के कुछ पॉइंटर्स बताने हैं कि हाउ विल यू इंक्रीज द कॉलेज का डाइवर्सिटी, व्हाट आर द स्टेप्स यू विल गोइंग टू टेक। तो दीज आर HR क्वेश्चंस, राइट? ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा आपको। ओके, नाउ गाइस प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस सो आई कैन आंसर, राइट? यस, अरेना, आई होप आई So एम for this स्पेलिंग योर नेम diversity, राइट। Sir Raina, it's fine. I'm used to it. So one question for this, जो diversity वाला question you just mentioned, what would be an ideal answer for that? आइडियल आंसर डाइवर्सिटी के लिए, देखो क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड। दे बेसिकली आस्क्ड, दैट वाज अ, आई थिंक सम फॉलो अप क्वेश्चन इट वाज। ओके, तो कुछ Oh, टॉपिक उनका स्टार्ट हुआ था कुछ डाइवर्सिटी रिलेटेड किसी टॉपिक से, एंड दैट वाज वेरी okay, स्पेसिफिक टू द sir. पर्सन CV। सो ओके, तो Yes, वहां sir. पर आपको बेसिकली यू हैव टू ऑब्वियसली ट्राई टू इंक्लूड एवरीवन, राइट? यू हैव टू ट्राई टू इंक्लूड all the genders, you have to try to include the other genders also, you have to try to include people from all the sections of the society, all the economic strata of the society. So you'll talk on things like this, and then you will pick up a lot Okay, of sir. co-curricular activities, and you will say ki, "Oh, okay, I'll try to focus on this, I'll try to become a part of the legal aid society of the college, which is naturally linked to diversity का basically this propagation, है ना? लीगल एड की जो Okay, sir. सेल्स होती है हर कॉलेज में होती है, सो दे वर्क So, टुवर्ड्स। हाँ, hmm. Sir, I'd also mentioned in my CV that I was working with a law school in near my school to try to implement a legal aid center in my school. they will ये be मैंने very अपने CV interested में in that, मेंशन किया है. they will Yeah. be very interested in that, so So अच्छे से sir, prepare उसके करो। लिए what would you say कि what should I prepare for that exactly? Like what should अरे I ना, say? टेक Yeah. 5 minutes, थिंक ऑफ Yeah. क्वेश्चंस। मैं वही बोल रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चंस पूछो, मैं आंसर करके बताऊंगा आपको। Okay. ठीक है, Okay, दे sir. आस्क अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे विल आस्क यू लीगल एड का लीगल बैकग्राउंड, सो यू शुड नो कि Hmm. DPSP में लीगल एड कौन से आर्टिकल में है, बताओ। मुझे याद नहीं सर ऑनेस्टली एग्जैक्टली, अभी तो ये आप सब चीजें, ये अगर ये नहीं बता सर पाओगे ना, इट विल क्रिएट अ बैड यस इम्पैक्ट। सर तो ये पढ़ लेना, ओके सर लीगल एड, लिटरली कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल एड सर्च कर लो। ओके Sir, I सर think आई it's विल डू दिस इज दैट हाउ, 39A, if जस्ट I'm गाइस not wrong. गाइस जस्ट It's वेट अ सेकेंड। थैंक आप लोग 3 लोग 4 लोग साथ में मत बोलो, प्लीज प्लीज प्लीज। जस्ट यू CV को प्रॉपरली रिसर्च कर लेना। लाइक ओके आई सर एम प्रिटी श्योर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे उनका बहुत फोकस है, तो एनी टॉपिक इन योर CV इफ यू कैन लिंक दैट विथ कॉन्स्टी एंड पॉलिटी, थ्रू एंड थ्रू प्रॉपर रिसर्च कर लो। CV पे ही, जिसने CV घोल कर पी लिया अपना, ओके उसका इंटरव्यू इज गोइंग टू बी बेटर फ्रॉम अदर्स। ओके, ठीक है सर यस यस। एक एक करके, थैंक यू अब सर अवनी अवनी प्लीज रेज योर हैंड्स एंड देन यू कैन आस्क दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रॉम मी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में मुझे पूछो, ट्रीट मी लाइक एन इंटरव्यू।
and just ask that question to me. I'll answer that question. Okay? Harshita, you can ask, and then Avni, you can also ask. Okay? Harshita, So, yes. yeah. So in my CV, I've mentioned that first that I was working with the non-profit organizations, and after that, I built like co-founded my own non-profit organization, which was based on gender equality and feminism, and helping and fundraising for underprivileged community. Hmm. So, is it possible that they will be asking specific questions related to that? बताओ डीपीएसपी में जेंडर इक्वालिटी कहाँ कहाँ encouraged कहाँ कहाँ? है जेंडर इक्वालिटी की बात डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल्स में है टेल मी अ, विच फंडामेंटल राइट्स लिंक टू जेंडर इक्वालिटी पढ़ना टेल मी पड़ेगा. अबाउट द 106th amendment constitutional amendment 106th amendment. What happened in that? एग्जैक्टली ये सारे क्वेश्चंस याद रखना ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सब यूट्यूब पे डालूंगा मैं इफ यू आर नॉट टेकिंग नोट ऑफ इट इट्स ओके नहीं बट नहीं ये सर तीन है. क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक हो गए जेंडर ठीक इक्वालिटी है. जेंडर के नाम पे वो उसका भी पूछ सकते हैं, वो जो मासा अमनी का हुआ था एंड हिजाब वाला इशू हुआ था. बिल्कुल 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 आई विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट याद है नहीं, ऐसे तो कोई दिस इज द जजमेंट. सबरीमाला जजमेंट हाँ सुनी तो, हाँ आई रेड इट ड्यूरिंग वो लीगल की क्लास में. नाम पता होना चाहिए जजमेंट का आपको है ना हाँ, उन सब जजमेंट्स का नाम पता कर लो सुप्रीम कोर्ट हम्म, ऑब्जर्वर पे जाना और अच्छे से प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट के केसेस थोड़े पढ़ लेना ओके डू यू वांट टू ठीक है. आस्क सम क्वेश्चन हाँ, so for instance, now I have yeah, mentioned in mention that career goals that I want to explore, or I am inclined towards exploring international or corporate law. So why is that? Why do you want to explore corporate or international law? द प्रॉब्लम इज आपने दो चीजें मेंशन कर दी इसमें Okay. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ आंसर लाइक किस दोनों में से किस क्वेश्चन का आंसर चाह रहे हो आप Mm-hmm. हैव यू गिवन सम वन वन द अदर थिंग प्रायोरिटी ओवर द अदर थिंग किसी को प्रायोरिटाइज किया है दोनों में से आपने सीवी में I have because I have taken BBLB, so I think I have prioritized corporate sector automatically because I want to gain business acumen. ओके तो नाउ आस्क मी द क्वेश्चन Um, since you have mentioned in your CV that you are inclined towards making meaningful impact from your work, but you have also mentioned you want to do you are inclined towards doing international or corporate law. So why is it that you want to go into the corporate law sphere? Basically, ma'am, the interest in corporate law came from my education of class 11th and 12th when I was studying commerce. And I had a lot of interest in subjects like business studies, and obviously there was Sir, some I had overlap. humanities. और आपने कॉर्पोरेट लॉ लिखा है चलो Huh. ठीक है तब ह्यूमैनिटीज है तो लेट मी टेल यू दिस But I had entrepreneurship and psychology, so I've mentioned So that. first you mentioned that I've studied entrepreneurship and psychology. Not mention, don't mention psychology, mention entrepreneurship. Okay. So Okay. you can say ki, you have studied entrepreneurship. This is one. Second, you have known people who I come have from been a business working. family. So, Yes, you have known people who have been business oriented. I come from a business family and I have been surrounded by lawyers specializing in corporate laws. And I have also had conversations with people working in law firms, and I am very attracted to that lifestyle. First, second, my basic idea of doing law, one of my reasons why I'm trying to do law is to assist my family in basically furthering the business activities. And I think studying corporate laws can be a very huge step to that. That is one. But keeping apart corporate law, because I'm very aware that people might lose interest in college or might, a better answer would be, might get some other areas of laws more interesting. One of such areas of law is international law for me, and that's because, then add your reason. International law में interest कहाँ से आया? And that's I because got
select. Matlab, I got awarded for best chairperson in MUN, and I was the vice Yes. president of So ये मत 20. लिखना, ये मत बोलना. That's because I have done a lot of Model United Nations during my school years, and I have developed a keen interest on UN and related conventions, international conventions. And I find it very fascinating, and I find this very fascinating that my entire career in base is based around all those conventions and laws. So that is another interest of mine, which I would love to explore in Symbiosis Law School. And I've also come to know that there are a lot of moot court competitions, which, International moot courts. yes, not international, national भी होता है, international मत बोलना. Okay. बोलना कि there are a lot of moot court competitions. Actually, in fact, during my research, I found out most of the reputed moot court competitions, national or international, for example, Viz Vienna, Viz Hong Kong, Philip C. Jessup, ICC ICC moot court जैसा. guys, मेरे को मत रोको. I'm trying to answer. Okay, 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 सुन okay. लो, वो सुन लो. पता नहीं क्या. Let me complete it. Let me complete it first. Let me complete the answer. रिकॉर्ड हो रहा है ना, आप इसको वापस सुन सकते हो, ठीक है? Okay. एक सेकंड. Siri has gone mad. या सो मैं मूट कोर्ट के नाम ले रहा हूँ ताकि अवेयरनेस रहेगी, उनको भी पता चलेगा कि यू नो योर थिंग. सो यू विल मेंशन फिलिप सी जेसप, एमिटी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है इसको, विच इज ऑल्सो इन नोएडा. ओके. There's ICC, International Criminal Court, Moot Court Competition. There's Henry Dunant, या Henri Dunant बोलते हैं उसको. That's it. IHL, International Humanitarian Law. ठीक है. यू कैन टॉक अबाउट विज वियना, विज हांगकांग, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस हैं. सो यू कैन से कि you are also aware of this fact. Okay, so it gives you a very good opportunity to explore international law, the college, being part of that college, right? And this basically rounds up an entire reason of why you want to pick international laws. Yes, Arshita, now you can speak. You have a follow-up question on this? No, sir. ठीक है. Avni, yes, you can ask your question. Then Avasakta, you can ask your question. Yes, sir. Sir, actually, I had mentioned in my career goals that I want to go for civil services after I complete my law degree. Hmm. So, how can I elaborate on like why am I interested to pursue law and why not any other course? I mean, I can go into civil services with any other course as well, but why specifically law? हाँ, this एक सेकंड रुक जाओ. देखो, दो रीजंस हैं, ठीक है. Tell them, okay, that is why you have prioritized your BA LLB degree. Okay, you have gotten a call for BA LLB, right? Yes, sir. तो BA LLB जस्टिफाई करने के लिए आप ये बोलोगे कि लेट मी फॉर्मुलेट दिस आंसर. Sir, it's because of couple of reasons. First, studying BA LLB completes my objective in two ways. First, I will go through all the BA subjects which are required for the general studies paper in the prelims as well as in the mains of the UPSC uh, paper. That's one. Second, studying LLB obviously because it aligns with my interests of being a lawyer and study law, but it also prepares an optional subject for me which will be required in my mains paper. That's one reason. ठीक है. It will, second reason, it will give me ample time to study these subjects because these subjects require a lot of attention and a lot of obviously preparation. 5 years is going to be an optimal time for me to prepare subjects like economics, political science, history, है ना, psychology, sociology, ethics, as well as prepare my optional subject as law, as well as I can straightforward appear for the exam just immediately after graduating. That's one. Second, I have done this research, sir, and ma'am and sir, that most of the people who are qualifying for the CSE exams are from a lot of humanity background, okay? And most interestingly, law students have
one of the highest success rates in CSE, civil services exams, which is almost in double digits. So, for example, if 100 law graduates appear for it or write the mains paper, at least 10 of them qualify for the final paper. And also this year, sir, I have researched about it. Name a couple of people who have qualified the paper. There you can find an article. आप search कर लेना कि इस साल लॉ ग्रेजुएट्स ने कितने कितने लॉ ग्रेजुएट्स ने यूपीएससी क्लियर किया है. तो ये आपका सेकंड रीजन होगा. थर्ड रीजन is कि sir, although my primary objective is to clear civil services, however, law as a career also attracts me a lot, and it might be possible because I'm still young. I'm still trying to explore a lot of options. Law gives me that opportunity to explore alternatives. And one of the very attractive alternatives for me is, बताओ, आप बताओ, अगर यूपी So चलो, ऑनेस्ट litigation. क्वेश्चन, ऑनेस्ट क्वेश्चन, हाँ, Hmm. यूपीएससी नहीं निकला क्या करोगे? सर एक्चुअली मेरा रीज़न यही था। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करके देन सिविल्स देना था। मेरा सिविल्स का हाँ. बहुत पहले से मन था। बट देन 12th में लाइक क्लैट से जस्ट बैकअप, 3-4 मंथ्स पहले आई थॉट बैकअप, कि बैकअप कुछ होना बैकअप, हाँ चाहिए। हाँ, पता चल गया एंड लॉ मुझे. इंटरेस्टेड मी बिकॉज यस यस. कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था पॉल साइंस में एंड एवरीथिंग। तो आई थॉट Your voice is not coming सीएसई। across properly. कट रहा है आपका इंटरनेट कनेक्शन is some issue. ठीक है, चलो, आई गॉट योर आंसर. बट उसमें ना स्पेसिफिकली बताना कि मतलब बैकअप नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि यू स्टिल ओपन टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, बिकॉज हो सकता है कि यू माइट फाइंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव, एंड सिंस लॉ एज अ सब्जेक्ट is very attractive to you, you might find something better. ठीक है, and you don't want to close all your doors, and law gives you that opportunity that you can explore more. Maybe litigation, maybe if I want to serve people by being a civil servant, that can also be done by becoming a judge, है ना? तो you can say that कि मतलब थर्ड रीजन, यही दो तीन रीजन समझ गए. एक तो आपके सिलेबस से काफी मैच करता है, सेकंड सक्सेस रेट इज वेरी हाई, एंड थर्ड it basically gives you opportunity to explore a lot of opportunities. Okay, and सर एम आई those ऑडिबल नाउ? opportunities, yeah, you are audible now, and those opportunities are very interesting to you, because you love political science as a subject, and law mein interest naturally came to you. So it was like a no-brainer to me to go for a law degree and then maybe aim for CSE, right? So this will be like a very good all-round option. And इंटरव्यूअर को लगेगा कि भाई देखो बहुत क्लैरिटी है इसके दिमाग में, 1 2 3 सीधे ऐसे रीजंस, है ना, कंफ्यूजन नहीं है कुछ. ओके. राइट सर, थैंक यू सो मच। ओके, यस शिव्या. Shavya, I'll also come to you. Shivya, then Shavya, and then Mrinali. Okay. So, like I've mentioned in my CV that I have a diploma in classical music. Can they ask me to sing? They might. It's possible. It's possible. डरना मत, गा देना. There's no issue. Okay. And also, like I have a diploma in Kathak, so they can ask me to dance as No, well. no, 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 no. Dance करने नहीं बोलेंगे. Okay. They might ask you questions on Kathak though. They might ask Okay. you about some famous personalities, important dancers. ठीक है, कथक जैसे एक दो तो नाम याद रख लेना जिनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला है, कथक डांसर्स. Okay, sir. Okay. And second, a couple of Kathak mein, I'm not very familiar, but I'm pretty sure there are a lot of poses, and they're named basically, Yes, right? sir. हाँ, तो वो Yes, sir. सारी चीजें पूछ सकते हैं आपसे स्पेसिफिकली, so be prepared for that. Okay. Okay, sir. Also, like, can they ask me my stand on the Israel-Palestine issue, or is that like too हंड्रेड controversial? परसेंट 100% ओपिनियंस पूछ रहे हैं वो. आई टोल्ड यू ना, Okay, sir. हिजाब जजमेंट पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड उनका ओपिनियन. सो देन यू बेसिकली हिजाब वाले जजमेंट में देखो आंसर क्या होगा. You will try to balance it out. You will try to say कि sir hijab judgment is थोड़ा very technical, and it will obviously depend on the public policy point of view, because the justification for banning hijab in school comes from the reasonable restrictions given under Article 19 and reasonable restriction given under Article 25. That's one. However, the argument of freedom of speech and expression, the argument of personal liberty from Article 19 and 21,
and the argument of hijab being a essential religious practice of Islam also comes in picture. So it will be a balancing act, sir, and that is why I think Supreme Court might be very divided on this, because we have seen a lot of recent judgments have been very split. The decision has come into 3:2 ratio. जैसे आप एग्जाम्पल किसका ले लोगे, 3:2 में राइट टू मैरी का ले लोगे, है ना? बैलेंसिंग एक्ट है। आप बोलो, आप उनको ये बताओ कि देखो मुझे सब पता है, मुझे आर्टिकल 19 का आर्गुमेंट पता है, मुझे 21 का पता है, मुझे 25 का पता है, मुझे पता है दोनों साइड से क्या आर्गुमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है? और आप यहाँ पर बोल सकते हो, यू कैन टिल्ट टुवर्ड्स वन थिंग, यू कैन से कि आई थिंक सर इन माय ओपिनियन द सुप्रीम कोर्ट माइट अपहेल्ड इट, नॉट बिकॉज इट इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। मैं आपको बता देता हूँ, इट इज नॉट, बिकॉज कुरान में इट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर कि सबको हिजाब पहन के रखना है। कुरान में इट्स बेसिकली रिटन कि आप अपने इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स को ढक के रखोगे, बिकॉज इट्स बेसिकली, यू नो, religious morality and all of that, but it's not essential. Although right to freedom of expression and right to freedom of personal liberty में ये काफी बड़ा argument हो सकता है, that you cannot direct someone what to wear and without a proper justification. Why are you telling them कि you cannot cover your head? That's a very counterintuitive argument. So there is a possibility that the state might not be able to justify the proper reason for it. ओके, तो ओपिनियन को क्वेश्चंस में आपको दोनों साइड बताने हैं पहले। प्लीज अंडरस्टैंड इट। कोई भी ओपिनियन क्वेश्चन पूछें, फर्स्ट टेल देम कि यू आर अवेयर ऑफ द बोथ साइड्स आर्ग्यूमेंट। ओके, सो इजराइल पैलेस्टीन में आप बताओगे कि ओके, इजराइल हिस्टोरिकली दैट लैंड बिलोंग टू जूस, हाउएवर that land went through a lot of succession activities as every land does. इंडिया का आप एग्जाम्पल ले लो। इंडिया में obviously Indus Valley civilization, then Vedic age, then Gupta Empire, then Maurya Empire, then Gupta Empire, then Mughal Empire, then Britishers. So dynasties change, right? But the problem right now is a very important right which is given in international law, which is right of self-recognition. That a community occupying a particular piece of land have a right to govern themselves, and that right was also given by the UN. Okay, the two-state solution given under Israel and Palestine was not respected by Israel properly. However, there have been a lot of activities, right, which have not been clear from the both sides. But you can say right now what is happening is unfair on obviously Palestine's part, because more than 35,000 people have died. Okay, nothing justifies that. So you can be, basically you can balance, and you can then tell कि, okay, there's a reason why India has to criticize this, right? So our government का अपना stance क्या है? We have historically always supported Palestine, ठीक है? We have historically recognized कि Palestine has a right of self-recognition. तो गवर्नमेंट ऑफिशियली स्टैंड हमारा ये है, तो आप गवर्नमेंट स्टैंड के साथ जस्टिफाई करके जाओगे उसको। ओके, यू कैन लुक एट द स्टेटमेंट्स और ओवर एंड ओवर, ठीक है? यू कैन से दिस कि लिटरली सर वी हैव in 1950s and 1960s, the Indian government also came with stamps, postal stamps supporting Philistine, as it is called in Hindi, right? So historically, we have always been in support of Palestine, okay? And this is what this is what basically should happen, right? That the two-state solution should be accepted peacefully by both the states, whatever the solution might be, but a mass killing just for a couple of terrorists is not the correct answer, in my opinion. This can be solved very peacefully, and I agree with my government stand that Palestine has a right to be recognized as a separate state. Okay, but also the attacks being done from Hamas on Israel, and Israel से जो attacks Palestinians पे हो रहे हैं, how the Rafah is affected, this is obviously out of proportion. Okay, but we have to be very diplomatic about it. Okay, because Israel has helped us in the past, but as a human, it's conscience talking or whatever you can say. It's balanced basically. Okay, Okay, sir. Thank you. balance करना, लेकिन you can take a side. You can take a side. They expect you to take a side.
तो आप बोल Okay, दो sir. कि हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई माय गवर्नमेंट इज नॉट ओपनली क्रिटिसाइजिंग इजराइल। ये बोलो कि मैं, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग इजराइल, बिकॉज obviously due to during a lot of conflicts Israel has supported us, provided us weapons, but as a human I cannot withstand what is happening. More than 35,000 killings, nothing justifies that, right? So you can be very very diplomatic about this answer. मैं वही Okay, बोल रहा हूँ sir. कि ओपिनियन वाले आंसर्स में दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स दो और फिर अपना ओपिनियन बताओ, इन माय ओपिनियन व्हाट आई थिंक, राइट? And this is the correct way of answering. Trust me, you don't want to be like, what is your opinion on Israel and Palestine? You can't be like, सर इजराइल तो जेनोसाइड कर रहा है, मतलब इजराइल को हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए. दे विल बी लाइक, व्हाट आर यू सेइंग? दे वांट योर दे बेसिकली आर टेस्टिंग योर नॉलेज. इस इशू पे आपको कितना पता है, तो आप फॉर और अगेंस्ट दोनों दोगे, और फिर हो सकता है आप फॉर पिक कर लो या फिर अगेंस्ट पिक कर लो, है ना? सो यू कैन बी ओपिनियनेटेड बट गिव बोथ साइड का आर्ग्यूमेंट, right? This is how you Okay, answer. sir. Yes. Yes, Shavya. Shavya, then Mrinali, then Avashakta, and then Avni. Okay? Yes, sir. So I was reading this article and I was wondering how to answer questions based on that. So I'll just ask you the question straight Yeah, up. yeah, go ahead. Go ahead. Are you aware of the Pune accident wherein a boy of 17 years of age got drunk and drove a Yes. car straight into two people due to overspeeding and killed them? And how he was initially just asked to write a three-word essay for that crime? Yes, ma'am. I'm aware of that accident. Yes. Yeah, and what is your opinion as to why people, and especially youngsters, feel like they're less likely to be caught while committing a crime? And how do you think we can prevent it? Also, do you think that government employees like police personnel are responsible for that? Okay. Ma'am, in my opinion, I think it comes from the false sense of security which is basically projected around them. That's one of the reasons, because a couple of people around them make them feel like they can do and get away with anything. Okay, that's one of the reasons I think there's a problem with that. Second, obviously, our justice system is very protective of minors, especially people under the age of 18 years, because we have a Juvenile Justice Act which treats minors as juveniles and they are not subjected to trial like a normal major, and they are not going to prison. Okay, so that is obviously there, basically giving people idea that okay, minors can do and get away with things. Third, obviously, I don't want this, but this is a truth that our justice system, not justice system specifically, but police system is fairly corrupt. Okay, यहाँ पर आप साइट कर सकते हो किसी रिपोर्ट को, ठीक है? You can cite the corruption index, okay, and you can tell them कि India as a country has not been doing well with regards to its perception on corruption, and that is why rich people, especially because the child in question, the person in question, belong to a very affluent family, and that is also from where that false sense of security comes, that people can do whatever they want and get away with it. To that particular thing, corruption adds up to it, because as I'm pretty sure, sir, ma'am, and sir, you are also aware that a lot of things have come into media, and even the commissioner of Pune has told this, that the parent, the father, and the grandfather tried to basically manage this entire affair and shrug it under a rug. They tried to hide it, they tried to manipulate it. They even tried paying their driver to take the fall for him. So things like this are why people like this, people like a 17-year-old kid belonging to a very rich family, thinks that they can get away with these kind of crimes. The things which can cure such an incident is, in my opinion, first, obviously, the partiality in investigative system of our country, that obviously controlling corruption at the lowermost level is the most important thing, because if a crime is committed, it's very important that the investigation of that crime happens properly, because a lot of possibility of manipulation arises there. A small police officer can hide evidence which can lead up to
acquittal of a guilty party. So we have to make sure at the lowest level, at the grassroots level of investigative agencies, corruption is not prevalent. And for that, we can make certain stakeholders liable, right? Like you can make the commissioner liable if then any kind of corruption is reported. Make the commissioner responsible. How will this help? We can take this in context of anything else. For example, let's say if I'm a class representative of a batch in symbiosis law school, and the students of my some of the students of my class are doing something. If pressure is put on me that it's your responsibility to report if something is being done wrongly under your supervision, or you will face the consequence, then I'll be more proactive, right, to report such things. But the problem right now is maybe all the stakeholders are getting a cut of that, tainted money or maybe benefit of the corruption. So we have to start from the grassroots level. We have to make sure all the investigation is done properly, everything is reported properly, nothing is hidden, and that false sense of security goes away. Second, which is just a law not being utilized properly, is obviously the Nirbhaya judgment. As I'm pretty sure, ma'am and sir, both of you know that the Nirbhaya judgment made an exception for heinous crimes, where a child over the age of 16 years but under the age of 18 years can be tried as an adult. Okay. However, this choice is given to the Juvenile Justice Board, which is established under the Juvenile Justice Act. In only heinous offenses like rape and murder, this option is granted to the Juvenile Justice Board. And I'm pretty sure all of both of you, ma'am and sirs, know this, that this case was also sent to the Juvenile Justice Board, but no outcome came. So I think that jurisdiction of the Juvenile Justice Board can be expanded to offenses where life has been taken of an individual. So rather than just allowing Juvenile Justice Board to try a juvenile as an adult for heinous offenses, we can introduce this amendment where a juvenile is responsible for taking a life. There we can make the juvenile responsible for these actions so that people know, even if you are a child under 18 years of age but over 16 years of age, you cannot go away if you have taken a life. You cannot get away with it by paying money. You will have to serve your time. So this can be two possible angles. आप करप्शन पे टारगेट करो जो ग्रास रूट लेवल पे चल रही है, पुलिस ऑफिसर्स को पैसा देके चुप करा दिया, एविडेंस छुपवा दिया, इसको पहले हमें क्योर करना पड़ेगा। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का थोड़ा एम्बिट हमें एक्सपैंड करना होगा, बिकॉज अगर आप निर्भया केस से इस केस को कंपेयर करोगे, there's really a lot of stark differences, right? That was a very conscience shocking rape case as compared to this case, because it is uh, in news, as there was obviously an affluent family involved and they tried hiding evidence. That is why it came into news. Or else, we have seen a lot of accidents in Delhi NCR also done by a lot of BMWs and Audis, and people have walked away or have not been fairly punished. It's maybe time to expand this definition of juvenile justice, uh, expand this jurisdiction of the Juvenile Justice Board to include minors who are responsible for death of people. We have to make them liable. We have to make them responsible so that people know कि if you take a life, you have to go to prison. Okay, so this can be two possible angles you can hold, right? Okay, sir. Sir, I had one more question. पूछो. This was something that I had mentioned in my CV. So Hmm. you have mentioned in your CV that you had an inclination towards political science and how that drove you into law. So why not political science honors and why law? तो आप इसको लिंक करोगे, पहले तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से आप बोलो कि करियर अपॉर्चुनिटीज, पहले तो फोकस ऑन द करियर अपॉर्चुनिटीज, द लॉ का लिंकेज पॉलिटिकल साइंस से कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन को लाओ बीच में, ठीक है. सो यू कैन आंसर कि political science as a subject intrigued me because of not the political theory part of it, but the application part of it, which basically comes from the Constitution of India and also through a lot of
You can talk about division of powers. You can talk about the union state, local bodies ka distribution of power. So basically, that part of political science drove your attention, and that basically linked your interest from political science to constitution. Okay, this is a first answer. You can link this. Okay, ऐसे लिंक कर सकते हो. इसके बाद आप बोल सकते हो कि political science specifically narrows options available to you with respect to career. Okay. On the other hand, taking law opens a lot of avenues for me. Okay. So I can be a practicing lawyer. Okay. Making PILs under Article 32 or Article 226 to the Supreme Courts and High Courts, arguing uh, issues of interest, right? Or I can also appear for civil services. I can also become a judge. So a lot of avenues are opened if I take law. Political science, but the avenues are limited, the options are limited. And third, law acts as a perfect launching pad if I want to pursue further studies. If I want to specifically focus on consti law, I can also do an LLM on consti law specifically. बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट होने का मतलब कि नहीं मुझे पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना पसंद है. मुझे कॉन्स्टी में इंटरेस्ट आया पॉलिटिकल साइंस से, एंड मे बी आई वांट टू फोकस ऑन कॉन्स्टी and related concepts, right? So you can drive that answer from political science to consti law, and maybe an LLM, potential LLM of consti law honors, right? Targeting Sir, judiciary, targeting litigation, targeting civil services. You can focus on these areas. I've also mentioned in my CV that I am very likely to be drawn towards litigation and masters in law, so that should serve as a bonus Yeah, point yeah, for yeah, this. yeah. That will be very perfect. That will be very perfect for you. Yeah. Okay. Thank you, sir. No worries. Yes, Avisekta. Okay, so can you just tell me few judgments which fascinates you or taking consideration the हाँ. current scenarios and any judgments that you have एक dwelled into or सेकंड. researched about? एक सेकंड रुक जाओ. एक सेकंड. Let me just open a document. I have a couple of list of judgments. Uh, just give me a second. Have you If shared you it via Telegram? No, 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 I haven't shared it. I'll just एक सेकंड कहाँ है वो? Let me open this document somewhere else. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर वाले लिंक्स भेजे थे उसमें तो obviously all the judgments are covered indirectly, but I'll just tell you some couple of recent judgments. Okay, मैं भेज देता हूँ, रुको इसको. टेलीग्राम. Yes, these are the recent judgments of the past 3-4 months, December onwards. ठीक है. ये सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर पे जाओगे, आप केसेस पे क्लिक करोगे. केस के यहाँ पे फिल्टर में देखो, यहाँ लिखा है, मैंने यूज दिस फिल्टर टू सॉर्ट ऑफ ऑल द डिसाइडेड जजमेंट्स. ठीक है. इसमें आपको सारे डिसाइडेड जजमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी. ओके. जस्ट चेक द डॉक्यूमेंट आई जस्ट सेंट ऑन द चैनल. ओके. Okay, perfect. And I had a एक्चुअली few. Hmm. हाँ, और इसके अलावा और भी कुछ कुछ जजमेंट्स हैं. सो दीज आर ऑब्वियसली दिस ईयर के जजमेंट्स, बट कुछ कुछ जजमेंट्स आपको 2-3 साल पहले के भी देखने पड़ेंगे. सो वो मैं जजमेंट्स आपको फिर से भेज दूंगा आफ्टर द मीटिंग. ओके. जस्ट समवन प्लीज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट रिमाइंडिंग. ओके. Okay. And या. I've done quite a few internships, so can they ask me about my experience or हंड्रेड about the परसेंट knowledge I gained? 100%. So they will Very much start by, likely. yes, they will start by asking you about the internship, like what kind of work did you do. एंड जब आप काम बताओगे तो उस काम पे फोकस करके वो और पूछेंगे. तो अगर आपने गलती से मेंशन कर दिया कि आपने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, दे विल आस्क यू द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल, और उस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ओके. Okay, सो perfect. गिव मी एन एग्जांपल. आवश्यकता, एक एग्जांपल दो कोई इंटर्नशिप का. Okay, so I did an internship under senior advocate Akshay Mukhija at Delhi High व्हाट डिड Court. यू डू? व्हाट डिड यू डू देयर? Made briefs, researched about various matters, व्हाट काइंड ऑफ मैटर्स? um, mm, corporate matters, then RERA cases, CPA cases, व्हाट इज रेरा? Real Estate Development and Regulation Act. So Okay. can So they what work can you can collaborate? you can you elucidate on one of the issues you researched on? एक Okay, कोई so इशू I बता दो जिसको researched रिसर्च किया था.
Hmm. I researched upon if RERA and CPA can be taken as an concurrent jurisdiction, as in can be applied on a matter simultaneously. If there is a And matter what did you going, find? What did you find? I found two, three judgments stating that it can go, and both of the acts are independent, and the one can file a matter under RERA, and simultaneously the matter can go under CPA as well. हाँ, तो ये सारे इंटर्नशिप का कर लेना। जैसे आपने, मैंने तो रेरा पकड़ा। आप दो तीन लॉस Hmm. बताओगे, जितने लॉस बताओगे उतना ज्यादा सिलेबस बढ़ जाएगा आपका, है ना? तो इस Okay, तरीके से वो क्वेश्चन perfect. जैसे फॉलो अप कर पूछते हैं इंटरव्यू में। Okay, ठीक है, तो फॉलो and अप I क्वेश्चन खुद just से सोच लो। सारे पॉइंटर पे फॉलो अप क्वेश्चन। अगर मैं ये बोलती हूँ तो क्या क्या फॉलो अप क्वेश्चन आ सकता है? ओके। got it. I just realized after putting as like to serve for matlab, to be in litigation for 3 years and then appear for the CSC. But I just realized कि if they what if they think that and take it as a negative aspect कि if you're not serious about वाई law, so why SLS? सीरियस अबाउट लॉ? ये क्यों बोलेंगे? I mean, like नो नो। if like we have I have put that as my career goal, ki, like to appear for UPSC and serve as an IFS. So what if they say ki if you are too much serious, so you can get a mayor degree from any of the law colleges. नहीं नहीं, Why अभी तो आंसर SLS? किया ना मैंने, उसका उसका रीजन आंसर किया ना। जस्ट टेल देम अबाउट योर इंटरेस्ट इन लॉ, जस्ट टेल देम हाउ लॉ फैसिनेट्स यू एज अ सब्जेक्ट, एंड टेल देम दैट ओके, या तो सीएसई है या जुडिशरी है। बेसिकली आई वांट टू सर्व द कंट्री, राइट? सो इफ सीएसई Okay, डजंट पैन perfect. आउट, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, इंटरव्यू को बताओ, बी बी very honest, Yourself. sir. Success rate is not very high. So this Yeah. is an alternative option for me to serve the country. So I will start litigating. I will take up a lot of pro bono cases. Mention pro bono. Pro I bono, mentioned that. है ना? I हाँ, mentioned तो that. mention pro bono cases. Tell them कि okay, you will start taking up a lot of pro bono cases, and if opportunity presents itself after getting requisite number of years का experience, and after attaining the age of 35 years, I will Mhm. appear for higher judicial services exam and maybe become a district judge. So I Okay. can serve the country as a judge, right? So that is why you have taken law. नॉर्मल Okay. पॉलिटिकल I'm साइंस की डिग्री से जज नहीं बन पाओगे आप, है ना? right. Okay. I'm posing you this question. What's your stance about UCC? Ma'am, UCC is obviously is one of the most essential DPSP's directive principles of state policy. And as we know, the directive principles of state policy are a very integral part of the Constitution. However, they are non-justiciable, but that doesn't mean key states are not allowed to pass it. The entire objective of UCC, as obviously said by Dr. B.R. Ambedkar, the entire objective of DPSPs, as quoted by uh, Dr. B.R. Ambedkar, was when the states are ready for these reforms, because at the time of independence, our priorities were different. Our priorities were to get our agricultural system in order, to get reorganization of states being done properly, to focus on issues like hunger, issues like poverty. So that was not an optimal time to force directive principles on states. So for a couple of them, maybe we were not ready for reforms on with regards to environment. Maybe we were not ready for a uniform civil code because we had priorities in mind. That is why DPSP serves as a guiding principle to the states that ideally these all the states in the near future should implement these directive principles. And that is why one of the exceptions of fundamental rights under Article 31C is when a state is formulating a law to enforce a DPSP, that law cannot be challenged in Supreme Court for violation of fundamental rights. So, for example, sir or ma'am, liquor ban, when it was brought in by the Bihar government and the Gujarat government, could not be challenged, for example, on the grounds of right to trade.
because people selling liquor would have objected to that कि my right to trade is being violated, but they could 19G. not. Yes, but they could not do so because 31C protects such laws. So UCC obviously was something which was kept in the mind of the constitution makers that we have to implement it eventually. The reason for it being is simply personal laws being very paternalistic in nature and not very uh, equality front, right? So this was obviously thought out very much by our constitution makers, and that is why it was one of the objectives of them that every religion should follow similar personal laws, जहां पर principles of equality, non-discrimination are prevalent. That is why UCC is an aspiration of our constitution, and that is why the Uttarakhand government is also bringing UCC, and you can see a couple of very important characteristic of that UCC is equal rights to women for property, recognition to uh, live-in relationships as well. So these are some progressive steps, and that is why I think UCC is in line with our preamble as well as aspirations of our constitution. Okay. So I feel that's a perfectly 10 on 10 answer, but how much, like, what do you think? Like, for how long do we need to speak for a certain question they pose? नो 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 स्पीक, जो आपको दिमाग में आता है पूछो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेंटेंस बोल के चुप हो गए. No, जस्ट right, definitely, फॉर्मुलेट. हाँ, but है ना? तो ऐसे आपको हमेशा आंसर ट्राई करना, करने का पहले तो लीगल एंगल उठाओ. देखा आपने डीपीएसपी पूछा, मैं आपने यूसीसी पूछा, मैं सीधे डीपीएसपी पे गया. yeah, right. Pick out that article, tell them about how UCC is literally part of your DPSP and it was kept in mind by all the constitution makers, है ना? So you cannot Perfect. be against it. You cannot be against UCC. Let me tell you this. Okay. कॉन्स्टिट्यूशन में चीज मेंशन्ड है, उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे. आप नहीं बोलोगे कि यूसीसी अनफेयर है. ठीक है, बिकॉज इट वाज लिटरली मेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ताकि जो काफी रिगरस प्रैक्टिसेस हैं काफी सारे रिलीजन में उनको हटाया जा सके. यस. ओके. यस अवनी. Then Yes, sir. Nali, I'll So, come to you. Yeah? Okay. Yes, ask. sir, as I told you, I had mentioned about civil services. So, is it possible they ask me GK related to UPSC? थोड़ा हो सकता है, मैं बता रहा हूँ. Like पॉलिटी और कॉन्स्ट आर्टिकल करके मेरे को जाना. पता है. हाँ, पॉलिटी आर्टिकल आई कॉन्स्टिट्यूशन नो इट्स अच्छे से करके 350. जाना. सारे हाँ जी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, एवरीथिंग. आई एम टेलिंग यू, टेलीग्राम पे जितने भी पॉलिटी वाले नोट्स भेजे हैं ना मैंने, सारे पढ़ के जाना. बिकॉज हम्म. इट्स क्लियर, आज के जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उससे क्लियर हो गया है कि दे आर आस्किंग अ लॉट ऑफ पॉलिटी एंड लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. सर ऑल्सो लाइक अभी रिसेंटली न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुआ यूपीएससी का. यस, यू शुड नो, यू शुड नो, यू शुड नो, यू शुड नो दैट. Yes, sir. Sir, another thing that I had mentioned in my CV was about an internship that I had done with the MLA of Timarpur constituency. So, can they ask me questions surrounding to हंड्रेड that? परसेंट, Like, हंड्रेड what can they परसेंट दे ask? विल. जो जो एग्जैक्ट चीज मैंने आवश्यकता को आंसर की थी इंटर्नशिप के दौरान, वही उसी ऑर्डर में आपसे पूछेंगे कि क्या किया आपने, बताओ. फिर आप कोई चीज बताओगे, फिर उस पे उसको उठा लेंगे, उस पे लीगल एंगल खोजेंगे वो उस काम पे, So, और but फिर वी विल प्रोसीड. what I'm afraid is कि like I was involved in content writing. So, like the kind of content I used to write, like articles, opinion editorials, and all, व्हाट they were टॉपिक्स? obviously from perspective of yeah. योर यू हैव सम इंटरनेट कनेक्शन का इशू. अपनी नहीं आवाज आ रही है आपकी. Sir, I'll just like. जस्ट राइट योर टॉपिक्स ऑन द चैट. नंदिनी, आई विल ऑल्सो आंसर योर क्वेश्चन. नंदिनी, आर यू देयर? आई थिंक शी इज नॉट देयर. ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा ताकि एटलीस्ट शी कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एंड देन अंडरस्टैंड. यस मृणाली, तब तक आप पूछ लो मुझसे. So first of all, this session is only making me realize how shit scared I am for the main thing. अरे डरो मत, अभी टाइम है. 2 दिन, एक दिन भी बहुत होता है इतना प्रिपेयर करने के लिए. आपको लिटरली अपनी सीवी बस थॉरो होके प्रिपेयर करनी है, घुस घुस के एकदम.
So, sir, I have three और to four हमेशा questions. ऑल्सो मृणाली अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, किसी भी तरह का चीज लिखा है अपने सीवी में उसका लीगल एंगल खोजना. Sir, that is my very first question. I have 100% of my pointers pointing towards photography. So Hmm. one thing that I'm assuming they would ask me, how would you incorporate photography with law? I अरे can't find दैट्स an योर answer हॉबी, to it. दैट्स योर हॉबी, जबरदस्ती थोड़ी घुसाना है लॉ एंड फोटोग्राफी को. ठीक है. यू कैन But से मतलब how to लीगल make लीगल जर्नलिज्म बोल सकते हो आप, एक आंसर लीगल जर्नलिज्म बोल सकते हो, बट दैट्स जस्ट टेल देम दैट इट्स अ हॉबी. मतलब यू डोंट वांट टू मेक इट अ करियर, राइट? okay, दे आर नॉट स्टूपिड. absolutely. और So चीजें पूछो. हाँ. what is your okay? I am giving you a question, sir, as हाँ. the interviewee. What या. is your view on the suspicion of vote manipulation from EVM? Do you think BVPAT or the ballot paper system that was previously practiced would make the process transparent if we go back to it? ठीक है. Obviously, sir, obviously, ma'am, the electronic voting machine was brought in as a remedy to a lot of ballot tampering for which a lot of proof has been there. We literally have seen news, especially with regards to, we have a recent example of Chandigarh mayor elections where ballot papers were used and they were the in charge obviously had written a lot of stuff on those ballot papers. So that's a clear identification with proof that ballot papers are open to manipulation, and EVM and VVPAT mechanism was brought in as a remedy to solve this situation. Secondly, the accusations which have been coming with regards to EVM and VVPAT manipulation, they have not been proven yet. And these are basically accusations and hoaxes which we are hearing, but we don't have any record of any of it being true. The same was challenged in the Supreme Court recently this year. We have a judgment of the Supreme Court on the VVPAT, and the Supreme Court has also found those accusations to be baseless. So I don't think I we should have any reasons to suspect this VVPAT or EVM manipulation because our Supreme Court has literally evaluated this issue and has found the grounds to be baseless. Okay. जजमेंट Okay. है वीवीपैट का, वो आपको जो पीडीएफ भेजी है ना उस पर देख लेना. So मैंने उसी से देख के ये सोचा. ठीक है. So one more thing. हम्म. What? How do you think the Manipur violence could have been avoided? Ma'am, money for the issue of Manipur, we need to understand the history of Northeast because as we know, the mainland India was obviously integrated under a lot of empires historically. Mauryan Empire, Gupta Empire, and the Mughal Empire. Obviously, they were able to reach to the large chunk of the mainland India, but they were never able to access the Northeast. And that is why after independence, Northeast went through a lot of separatist movements because they thought they have a right of being independent. Okay. And that is why we had made a lot of concessions for northeastern states like Manipur, like Assam, for Arunachal Pradesh. Okay. And for that, we have the sixth schedule. We have status of uh, tribal areas or special areas in our constitution. The problem in Manipur is basically surrounding that status. Because as you, I'm pretty sure you might be aware, the special status under the sixth schedule is given to Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. And that is one of the most important solutions which could have avoided this entire issue is granting them some kind of autonomy because we know we have two majority tribal groups in Manipur, being Métis and second one being Kiki. the the Yeti, sir. yes, Cookie, cookie, yes. cookies. So we could have done something of a similar sort by giving these tribal populations some kind of autonomy with regards to implementation of property laws, because the entire issue is around this.
uh, perception that outsiders, illegal immigrants, and locals, majority locals of Métis, are taking away properties from the Kuki minority. So we could have avoided this entire situation if Manipur would have been a part of the sixth schedule of the constitution. That's one. Second, obviously we could have brought in a lot of legislative changes on the grassroots level to listen to their issues in a better manner. And third, the application of the Armed Forces Special Power Act has also created a lot of difficult situations. So I think that would have been another step where the implementation of AFSPA could have been managed in a better manner, right? So you can point like these three, four reasons for that. So, a follow-up question that I can think of this, which is Yeah, also my third question. yeah. So, since CAA is now coming into effect and people like more citizens are going to be a part of like our country now, how do you think the resource management should be, more efficient? Something along those lines, sir. Resource management, more efficient. Ma'am, in my opinion, it's not about the resource management. We have to recognize the rights given to refugees, especially the refugees which are persecuted and have no place to go. I think the government's main objective of bringing the CAA amendment was to basically give refugees belonging to minority communities who have no other place to go and to give them citizenships. It's not about resource management because these people are already in India and are already partaking in the resources available in the country. It's basically to give them rights which they are not able to legally get. They are still they have been obviously using the resources of our country since 2014. As I'm pretty sure you are aware that the CA amendment applies on people living before 31st December 2014. So these people have been in India. The main problem is they don't have any legal rights because they have not been officially recognized as citizens. And CAA solves this issue. Okay? Okay. ठीक My है तो first, रिसोर्स डिविजन की बात नहीं है इट्स बेसिकली दे आर ऑलरेडी देयर तो हम उनको बस लीगल रिकॉग्निशन दे रहे हैं नहीं मुझे लगा मैं भी थोड़ा टेढ़ा पूछ लूं. नहीं इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके नहीं नहीं ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकता है पूछे जाए तो Okay. आपको ये समझना है ओके ओके Okay. जस्ट अ सेकंड शाव्या दो क्वेश्चंस हैं एंड आई थिंक अनुषा ऑल्सो रेज्ड हर हैंड तो मैं एक बार चैट वाले क्वेश्चंस कुछ आंसर कर देता हूँ नंदनी हैड आस्क्ड एडिशनल डिग्री इन हिंदुस्तानी क्लासिकल जीके पढ़ लेना हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस अगर आपको आती है तो हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस के रिगार्डिंग जीके ठीक है कुछ कुछ हो सकता है स्टेट के डांस फॉर्म्स आपसे पूछे जाएं कथक कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है सो आंसर उत्तर प्रदेश ऑब्वियसली ओडिसी पूछ लिया जाए भरतनाट्यम पूछ लिया जाए and obviously recognized names in these dance forms. Okay, so that's one. Uh, for perspective of AAP, since the MLA belonged to that party, the article often criticized BJP and INC and often involves some strong words. So you have to mention about these issues and you have to again be very objective. You don't have to tell them कि article में आपने क्या लिखा था. You have to tell them, give me a topic. No example दो मुझे topic का अपनी आप. कोई example दे दो topic का. Sir, एक article was basically about how BJP and like how the freebies ka thing was started by Aam Aadmi Party and then हाँ BJP and INC started copying change that. it, So that change was it, change criticizing it, them. change it, and tell them one of the articles was about the issue of freebies, reveries, and then tell them कि why freebies are needed in some areas, but why freebies are also being exploited by a lot of parties. तो उसको Hmm. twist कर दो, वो bias हटा दो, topic रखो, Hmm. bias हटा दो, and then give your So perspective. personally, I'm not even biased to Aam Aadmi Party. It was just that it was a good हाँ हाँ opportunity, and नहीं obviously, नहीं नहीं I understand that internally, अवनी I had to write it नहीं नहीं on आई that अंडरस्टैंड इट part. बट कंटेंट बायस था ना आपके आर्टिकल का तो वो बायस्ड कंटेंट हटा के आप Right, right. ऑब्जेक्टिवली बताओ ओके Hmm. ठीक है Sir, कुछ हाँ articles were like straight up
बहुत ज़्यादा ही ऐसे लाइक उस वक्त जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें आई रोट एन आर्टिकल क्रिटिसाइजिंग बीजेपी कि हाउ दे पोर्ट्रेड एज इफ इट वाज नॉट डन बाय मनीष सिसोदिया बट द एलजी हैड डन एवरीथिंग एंड they had like glorified the हम्म। LG's role in the नहीं नहीं, वो IPO तो thing. MPs and MLAs obviously have interns for doing this also only. MPs और MLAs के Hmm. पास खुद का दिमाग होता तो खुद से आर्टिकल लिख के पब्लिश करते ना, तो नहीं इंटर्नशिप सर दैट इज करवानी नहीं फाइन बट चाहिए। लाइक कुछ आर्टिकल्स लाइक इतने ज्यादा वो थे कि लाइक दैट्स ओके, स्ट्रेट दैट्स ओके, फॉरवर्डली लीव इट, टारगेटिंग. लीव इट, लीव इट। ऑब्जेक्टिवली बताना है आपको, ओके? Just ठीक है. guys, give me 10 minutes, no? I'll be back in 10 minutes. I know you have questions. I know it's been a while. I know 10:30 बजने वाले हैं. But people who have questions, आप लोग stay रुकना, ठीक है? अनुषा, you had a question? I think आपने हाथ उठाया और फिर हटा दिया. Yes, it was basically someone asked about नहीं नहीं, political wait, science, wait, wait, so I wait, was wait. wondering how the हाँ, same thing would apply to a commerce student. ठीक Like, है. why not नहीं नहीं, commerce? we तो discuss that, no? Business laws में कैसे लिंक किया आपने CV में, है ना? Yeah, matlab, I basically said कि I like commerce background. I have come from a commerce background and I've studied business studies and Okay. I've liked it. Guys, So guys, basically give me that's 10 what I've minutes. said. Give me 10 minutes. I'm getting some call. Give me 10 minutes. I'll be back in 10 minutes. Please wait around for 10 minutes. Okay. आप लोग आपस से भी क्वेश्चंस आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हो. जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, ओके? Anusha, then Shavya, and then Shubh. This will be the order of the questions, right? You can discuss amongst yourself also a couple of questions. Just give me 10 minutes. I'll be back. Guys, do you know what kind of questions were asked in the interview today? I had a word with one of my friends who had the interview scheduled today for Noida itself, but then she said कि उसका interview like बहुत ही short duration के लिए था and they didn't ask anything, just told her to introduce herself, why law and why symbiosis, and that's it. That is like really scary. Okay. Yeah, I mean उससे कुछ पूछा ही नहीं, but I think a reason can be she didn't make a CV. She didn't upload a CV. Okay.
Guys, does anybody has any idea about the people who take the interview? I mean, uh, who are the people who take the interview? Because somebody said that uska interview like straight away Symbiosis के director ने लिया था. So like, is there something specific what person takes an interview? If anybody has an idea about that. I've heard of teachers taking the interviews. There was this girl whose YouTube videos I was watching for this interview thing, and she was like, my Noida professors took my interview for this thing. By the way, can you please share the YouTube channel's name? I mean, it might help. I don't know, I'll just search it up. Wait, huh? Yeah, yeah, sure. Thank you. Okay. ठीक है, let's continue. Yes, Anusha. Sir, I wanted to also ask, apart from that commerce thing, I had a doubt. Mhm. There was someone who got asked about reservation. What are your opinions about reservation? So I'm like, I don't want to sound opinionated, but how can I like juggle it without sounding any like specific side towards going towards a specific side? देखो कॉन्स्टी में यू रिमेम्बर जब मैंने वो पढ़ाया था आप लोग को राइट टू इक्वालिटी तो आई टोल्ड यू व्हाई रिजर्वेशन स्टिल देयर एंड व्हाट इज रिजर्वेशन Yeah, यू रिमेम्बर दैट लॉजिक yeah, I remember so unequal safety, tell them unequal yes handling. so tell them कि reservation is justified but the problem is it's not being implemented properly है ना Yeah, just tell them कि okay this is obviously a result of thousands of years of oppressions these people from scheduled castes scheduled tribes and other backward classes have faced and that yeah, has obviously led them to be very unequal तो equity के principles के बहुत against है ये and that is why we had to introduce reservation and thousands of year ka operation cannot be solved in hundred year right but we yeah, have to say that the problem is its implementation it's not reaching to people who need it the most okay yeah. so this is how you answer. And second thing, you can also say political parties over a lot of years. It's not just a particular political party, but every political party has exploited provisions for reservation for the vote bank politics. Okay? Yeah, है ना तो ये yeah. आंसर आप ऐसे फ्रेम करोगे एंड कॉमर्स वाले The, के लिए तो ऑब्वियसली यू विल से कि बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट एंड देन यू कैन लिंक दैट इंटरेस्ट टू कंसेप्ट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा था लॉ प्रेप के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट hmm, एक्ट में आपका इंटरेस्ट आया थोड़े कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस या ऑब्वियसली आपको पता है वॉइडेबल अग्रीमेंट्स इंग्रेडिएंट्स ये yeah, सब चीजें पता है ना so you'll be ready for yeah. these questions so then you can link that interest business studies say law preparation mein because law obviously business mein business laws was an avenue which was opened and your father being a lawyer ठीक है also created a lot of impact for you so you can say all of this Okay. ठीक And है
फैमिली में Can you? लॉयर हैं, उनका नाम ले लो, बोलो कि फैमिली में भी मेरे लॉयर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई सीनियर है लॉयर है, कोई सिबलिंग है, कजन है लॉयर है, उनसे इम्पैक्ट पड़ा, दे सजेस्टेड कि ओके बिजनेस और लॉ का इंटीग्रेशन इज अ वेरी interesting thing, okay, that can Hmm. help your that can fuel your hunger for studying commerce related subjects and law related subjects, and that is how you basically came into terms with okay, this is a very good option for me. Rather just studying BBA, you can do a BBA LLB degree, okay. Yeah. Yeah. So can they ask us like commerce questions, like accounts and all that stuff? बेसिक थोड़ा 12th 11th 12th वाला बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकते हैं, Okay. हो सकता है, okay. And I saw some video there. They asked the interviewers asked the students to give them some laws related to NGOs. So that made no sense. Like, FCRA अभी न्यूज में था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. actually, they charge those two NGOs for this thing, no? या But still, I find it thoda difficult, like on the spot, to come up with something. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, एफसीआरए है ना. इट्स ओके, आई एम टेलिंग यू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन बी वेरी पोलाइट एंड से कि आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट यू कैन स्टिल ट्राई एन आंसर. मतलब बोलो कि कंपनीज एक्ट लग सकता है अगर इट्स अ नॉट फॉर बेनिफिट कंपनी, है ना, सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं, ठीक है. तो ये सब Hmm. चीजें गूगल करके देख लो थोड़ा बहुत बेसिक, बट इट्स ओके इफ यू डोंट नो द आंसर बिकॉज दे डोंट ऑब्वियसली एक्सपेक्ट यू टू नो ऑल द लॉ. आप लॉ पढ़ने जा रहे हो, है ना. Hmm. इट्स जस्ट दैट हाउ यू हैंडल दैट क्वेश्चन दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट. Yeah. ओके, ठीक है. Shavya, Shubh, Mrinali, and then Avni. Okay, yes, Anusha, you have another question. Yeah, just one last one. So they were like, what are your strengths and weaknesses? And you told me to go about with research skills, right? Hmm. So there was this CPK session, and they said ki one of the greatest traits of lawyers, one of them is being research skills. He said that you can't state those in your strengths and weaknesses because I don't Whoever know. said that is stupid. प्लीज डू. रिसर्च स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और आप जस्टिफाई कर सकते हो बाय से गिविंग अ कपल ऑफ एग्जांपल्स कि आपने थोड़े बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं, कुछ लिखा है आपने, एंड यू कैन रिसर्च गुड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. अगर आपको एक टॉपिक दिया जाता है, अगर आपको उस पर रिसर्च करने बोला जाता है, यू हैव गुड रिसर्च स्किल्स बिकॉज यू हैव डन थिंग्स लाइक दिस. तो यू कैन दे कैन बेसिकली आस्क यू, अच्छा मैं अगर आपको एक टॉपिक दूं तो आप कैसे रिसर्च करोगे. सो यू विल टेल देम कि आई विल गो ऑन फर्स्ट गूगल, ठीक है, गूगल पे मैं डालूंगा. अगर मान लो इट्स अ लीगल टॉपिक, आई विल ट्राई टू फाइंड लीगल ओरिएंटेड आर्टिकल्स, लाइक आई विल नॉट गो टू विकिपीडिया, आई विल रादर पिक अप लाइव लॉ या बार एंड बेंच का आर्टिकल एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. इफ आई गेट सम जजमेंट आई विल रीड दैट, आई विल लिंक इट टू माई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज हाउ बेसिकली यू ट्राई टू से कि देखो मैं इस तरीके से रिसर्च करता हूँ, मैं विकिपीडिया जाके नहीं पढ़ने लगती बस, है ना. Yeah. तो And दिस इज अ गुड पॉइंट. पता नहीं किसने बोला आपको कि रिसर्च स्किल्स नहीं डालना है, बट नो, डालने हैं. ये सारे स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. दीज आर स्किल्स अ लॉयर रिक्वायर्स. yeah, so we can just add them like these are my research skills. हाँ Can learn वही है. them. हाँ, Yeah. जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाउ यू, दे विल आस्क यू कि मतलब हाउ कैन यू से कि आपके रिसर्च स्किल्स अच्छे हैं. तो यू कैन टेल देम कि people have obviously commented on your research skills. Like they have said कि my research skills are good because I've always have a knack of doing research in a right direction, and basically I have developed a methodology of sorts. And then they can ask you, अच्छा क्या methodology है आपकी? Then you can answer this things. कि अगर सर मुझे कोई टॉपिक दिया जाएगा, I know what links to refer to, what are authentic sources, what are official sources, and what are sources which we should be we should be steer clear of, है Yeah. ना. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड दे आर टीचर्स, दे आर फैकल्टीज, दे आर रियली अप्रिशिएट दिस. पता नहीं कौन बोल रहा है आपको ये कि रिसर्च स्किल मत डालना. So, like weaknesses, mein, are we supposed to like mention some things like okay, if I'm stubborn, I would just go about like स्टबर्ननेस, I'm स्टबर्ननेस इज अ, लाइक जो भी वीकनेसेस बोलो ना, उसको बोलो कि आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, एंड जस्ट टेल देम अ yeah, कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ हाउ यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. बेसिकली yes. So वीकनेसेस पूछने का पॉइंट ही यही होता है कि आप वीकनेस बताओ, और आप बताओ कि आप इस वीकनेस को एक्नॉलेज करते हो और इस पे काम कर रहे हो. दिस इज व्हाट एन yeah, आइडियल आंसर शुड लुक लाइक. okay.
ठीक है। Yes, and I have one thing for Avni. She asked me a channel ka, so it's called Sunena Mondal. Okay, किसी का thank चैनल है you, ये? Anuj. दिस इज Some symbiosis Noida ka interview I found. So this girl gave a few interviews. So I found that channel out for questions. ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर किसी ने नहीं दिया अभी तक इंटरव्यू क्या? ओके ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। Shavya, then Shubh, then Mrinali, then Avni. Okay, let's quickly wrap up this session. It's been a while, 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग अपलोड करने में भी टाइम लगेगा मुझे यूट्यूब पे। So just let's be pinpoint to the questions we are asking. Okay, after all of you are done with your question, I'll end the session. Yes, Shavya. Yes, sir. So my friend was interviewed at Christ. So they asked her this question, ki what is your opinion about vote bank politics and do you think the FPTP system that we follow is somewhere to blame for it? And they also asked her if India is ready to shift to the PR system. So what should be an ideal answer to this? देखो, फर्स्ट तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू डिफाइन बोथ द सिस्टम्स। फर्स्ट पास द पोस्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा और पीआर डिफाइन करना पड़ेगा। सेकंड, यू नीड टू टेल देम कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंडिया में क्यों है। बिकॉज ऑफ आर we being democracy, we have a lot of political parties, so clear majority cannot happen every time, right? But that will give us a lot of logistical challenge to, especially uh, taking candidates into this thing एज रिप्रेजेंटेटिव्स। मान लो किसी का 50 क्रॉस ही नहीं होता है तो क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होगा? एंड दैट विल बी लाइक अ ग्रेव एरर, स्पेशली इन अ फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी जहां पर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं और डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी प्रैक्टिस करते हैं। इफ वी डोंट हैव अ representative just because someone did not get 50% votes, then do we mean to say ki okay, that place will be unrepresented, which will be very 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 problematic in a country like India, where each constituency consists of lakhs of people, especially talking about Lok Sabha. So the problem is, if we go away from first past the post system, there is a possibility that lakhs and crores of people might go unrepresented in our Lok Sabha and Rajya Sabha, and that is clearly not ideal. Okay, but I understand why the vote bank politics might come into picture, but a counter argument to it is, if we get away, we get the first past the post system done away with, अब मुझे 50% वोट चाहिए, तो मैं और ज्यादा वोट बैंक पॉलिटिक्स करूंगा। मैं और लोगों को अपीज करने की कोशिश करूंगा। आई विल गिव रिजर्वेशन टू एवरी माइनॉरिटी कि सब मेरे वोट, सब मुझे वोट दो ताकि मुझे 50% फुलफिल कर हो जाए। Okay, so that is actually counterintuitive to the problem. It will more encourage the vote bank politics even further, because now you need to make sure that you are able to cross the 50% barrier, right? And that is what the problem is. First past the post system kind of indirectly keeps this in check, because you cannot appease every section of the society. And that is why you try to bring in actual reforms which might be acceptable to a large section of society। ठीक है, यू ट्राई टू ब्रिंग रिफॉर्म्स बेटर देन योर ऑपोजिशन। ठीक है, तो अगर बीजेपी ये बोल रही है कि हम ये कर देंगे, तो कांग्रेस बोल रही है नहीं, हम इनसे बेटर करेंगे। So it's not appeasing to a particular section of the society. You are trying to appease to the general conscience of the public, and that is why first past the post system makes a lot of sense, right? Okay, sir. Thank So you you. can answer like this, क्योंकि अगर आप 50% बोल दोगे तो मतलब आई विल गो हार्ड ऑन वोट बैंक पॉलिटिक्स देन, तो क्योंकि आई हैव टू Mm, मेक श्योर कि 50% से ऊपर वोट्स मिले मुझे। तो यू कैन आंसर समथिंग लाइक दिस। ओके, okay, ठीक sir. है। यस शुभ। Sir, I have mentioned ADR in my CV. So, what all are the things that I should like study about regarding that? एडीआर में पहले तो स्टार्ट विथ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 89 पढ़ लेना, जिसमें एडीआर डिफाइंड है सबसे पहले तो। ठीक है, एंड उसमें आपको सारे टाइप्स ऑफ एडीआर दिखेंगे, आर्बिट्रेशन से लेके मीडिएशन से लेके कंसिलिएशन से लेके लोक अदालत से लेकर सब कुछ। इन सबको इंडिविजुअली पढ़ना। ठीक है, रीड अ बिट अबाउट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। आई थिंक मैंने आपको ये बताया था, है ना? करियर कोर्स के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आप एक एरिया ऑफ
You Yes, can sir. tell this as an area where you're interested. So you can read on this international arbitration की चीजें पढ़ सकते हो आप, and read about a bit about arbitration act. So read about section 89 of CPC, types of arbitration, types of ADR पढ़ लेना, okay, and read about international arbitration as an option, okay. And why do you think arbitration is a Sir, much section better way 89. of resolve? What? Section 89. 89, section 89. Okay, sir. सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड कोर्ट है हेडिंग उसका, उसमें आपको टाइप्स ऑफ एडीआर मिलेगा, तो वो पढ़ लेना। And ठीक है, sir, this question that why would you prefer SLS Noida over NLU? जस्ट बी ऑनेस्ट, आई टोल्ड यू बी ऑनेस्ट कि नेम इज नॉट एवरीथिंग। द ऑब्वियसली एलुमनाई बेस एसएलएस नोएडा का, लोकेशनल एडवांटेज एसएलएस नोएडा का, opportunities SLS Noida gets is more than any recent tier 2 और tier 3 NLUs। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव रीजंस तो ऑब्वियसली अपने सीवी में भी लिखे हैं, इनको इलस्ट्रेट कर दो, इनको इलुस्ट्रेट कर दो। जैसा शुभ, आपका तो पर्सनल रीजन भी है कि यू लिटरली लिव इन नोएडा, so you want to be closer to home, right? So that's another reason. Presence of Noida in NCR gives you access to Supreme Court, the Delhi High Court, a lot of tribunals, a lot of opportunities with regards to every kind of uh, opportunities lying in the field of legal and law as a career, right? So these are the things you focus on. Okay. Okay, sir. Thank you. Yeah. Yes, Mrinali, then Avni, and then Yash. So, first of all, what are the kind of questions that they can ask us related to elections? इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना अच्छे से, ईवीएम वीवीपैट पढ़ लेना अच्छे से, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ लेना अच्छे से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दोनों के बीच में डिफरेंसेस पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच कम टू माई माइंड स्ट्रेट फॉरवर्डली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द लास्ट ईयर का जजमेंट जहां पर बोला गया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स को इलेक्ट करने के लिए यू नीड अ बॉडी ऑफ 3 people, है ना, सीजेआई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड सी एंड पीएम, but a law was passed which got rid of CJI, and instead they included a minister, union minister। ठीक है, so things like this, constitution, the judgment लास्ट ईयर का, the appointment rules जो पास हुए थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951 दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, सो थिंग्स लाइक दिस, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम, ये सब क्या होता है। ठीक है, इलेक्शंस कितने टाइप के होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, रीड अ बिट अबाउट लोकसभा, रीड अ बिट अबाउट पार्लियामेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए जो मैंने ग्रुप पे ओलेट की कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स भेजे हुए हैं पीछे, स्क्रॉल अप आपको मिल जाएंगे, उनको पढ़ लेना। ठीक है, मैंने इसलिए लेजिस्लेचर के नोट्स सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के नोट्स भेज दिए थे। ओके, Okay, sir. So, what यस, if they ask us a topic on which we have absolutely no idea about? so just apologize to them, tell them कि you are not absolute, you have you just say कि oh, I would, you can say okay, frame कैसे कर सकते हैं, you have absolutely no idea sir, you can I'm say sorry, I sir, beg I you, have I not read about it. yes, I beg your pardon, but I'm not sure about the I'm not really sure about the answer। ठीक है, then they might try to push you कि try करो, then try कर लेना, कुछ ना कुछ तो बोलने का try कर लेना। ठीक है, Okay. So, if they last push, year, go, अगर if they ask for an answer for the second time, मत बोलना कि सर पता ही नहीं है तो क्या बोलूं, या फिर ऐसा मत बोलना कि सर I have no idea, I can't say anything, that will go bad, you have to try। okay. So, last year they asked one of my friends about the most important social, political, and economic issues of our country. So, I have thought about social and political, but I really can't come up with an economic wala part answer ka. ब्लैक मनी, Okay. इलेक्टोरल बॉन्ड इशू भी उठा सकते हो, ब्लैक मनी उठा लो, एक तो ब्लैक मनी उठा लो, और दूसरा आप और क्या उठा सकते हो, इन्फ्लेशन इज रियली नॉट एन इशू इन इंडिया, इन्फ्लेशन तो काफी कंट्रोल में है अभी।
ब्लैक मनी उठा लेना, एक तो काफी इंपॉर्टेंट इशू वो हो जाएगा। दूसरा क्रिप्टो करेंसीज उठा सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज में जो हमारा ये है, लाइक वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यू कैन पिक दिस ऑल्सो। है ना, Yes. ये दोनों में से कोई भी एक, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे पिक कर लो। ठीक है। Okay. Sir, can we So use one SVB गाइस also गाइस in that गाइस गाइस sense? गाइस 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 गाइस, एक एक करके प्लीज, साथ में मत बोलो। Yes, I have a doubt वेट with वेट, this only. हाँ पूछो। Like, can we use SVB collapse in this sense as India's? Because some banks did fall because of that. इंडिया में उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था ना बेटा उसका। इंडिया में हाँ, you can talk about banking crisis, you can talk about PNB, you can talk about Yes Bank, all of that you can talk about। SBB मत पता ना यहाँ पर, हम पे okay. इम्पैक्ट नहीं पड़ा है सिलिकॉन वैली बैंक का उतना। ठीक हाँ. है। यस मृणाली, यू कैन So, कंटिन्यू। what if they ask me something about how do you like how would you how are the laws going to be framed on AI? So, what can I answer on that? You can't answer on that, you can just focus on how you can just tell them what you know, you can tell them कि RBI ने सर्कुलर्स इशू किए हैं वार्निंग पीपल अबाउट एआई। अच्छा एआई पूछ रहे हो आप, मैं क्रिप्टो से कंफ्यूज कर गया। एआई के लिए तो लॉज जो हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के एम्बिट में काफी आएगा ये। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेटी के एम्बिट में आएगा एआई काफी ज्यादा। ठीक है, तो रेगुलेशन विल बी वेरी मच कंट्रोल्ड बाय देम। अनदर कंसर्न्स अनदर कंसर्न कम्स विथ एआई इज वेरासिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि कई बार एआई में आपको पता ही है, चैट जीपीटी में ये इशू हुआ है कि sometimes ChatGPT answers wrong questions. This is one issue. तो आपको veracity वाला angle, like the information is correct or not, that also has to be made sure. Second सबसे important issue आएगा privacy का। So you can यहाँ पर include the Digital Personal Data Protection Act, कि अगर डीपीडीपी एक्ट में अमेंडमेंट फ्यूचर में आ सकता है एआई को कवर करने के लिए, the DPDP Act can be amended to cover the aspect of AI also. AI के लिए also you can cover, because it always obviously involves companies, startups, right? You can bring some amendments in the Companies Act. तो दिस इज हाउ यू ट्राई टू बेसिकली सी ऑल द एंगल्स ऑफ एआई, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। फिनटेक में एआई काफी यूज हो रहा है, तो आरबीआई कैन बी एन इंटरेस्टेड पार्टी। एआई का यूज हो सकता है शेयर मार्केट में काफी हो, एज यू नो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग काफी होती है, एल्गोरिदम यूज करके बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं प्रॉफिट्स के लिए। सेबी कैन बी अ स्टेक होल्डर। सो बेसिकली टेल देम कि इतने लोग हैं कंट्रोल करने के लिए एआई, इतने लोग हैं लॉस बनाने के लिए, कोई भी बना सकता है। आई एम नॉट द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली आई डोंट नो, ये मत बोलना, लेकिन बताना कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दे विल बी वेरी इम्प्रेस्ड कि यू आर अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस अवेलेबल। ओके, यू जस्ट नीड टू Okay. टेल देम कि देखो आप, मैं क्यों ये बोल रही हूँ, बिकॉज इसका लॉजिक Hmm. है ना। बस आप लॉजिक के साथ अपने आंसर्स को जस्टिफाई करते रहो। ठीक है। यस अवनी, Thank you, sir. Good night. गुड नाइट। Uh, अवनी, yes, sir. Sir, am I audible? यस यस यस। Sir, so actually at school I had mass media as an additional subject, and I think this subject is particularly offered by like a very less number of schools offer this subject as additional subject. So is it possible that they, and in my CV also, like I had mentioned an achievement like at a media literacy camp I had got an award for creating the best movie. So is it possible they might ask me media related questions? सेंसरशिप, सीबीएफसी पढ़ लेना अच्छे से। सेंसरशिप मूवी मेंशन किया ना आपने, सीबीएफसी का जीके पढ़ लेना। ठीक है, सेंसरशिप पढ़ Yes, लेना। sir. अमेंडमेंट भी आए हैं अभी, आई थिंक सिनेमाटोग्राफ एक्ट में, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द सिनेमाटोग्राफ एक्ट। ओके। Okay, sir. And मीडिया sir, the movie was ऑल्सो लिसन गाय, लिसन जस्ट अ सेकेंड। मीडिया ट्रायल पढ़ लेना। Read about, they can ask questions about what do you think about the accusation that the accusations of Godi media and things like media is not the fourth pillar of democracy anymore, and media is being biased, not criticizing the government for things like this। इन टाइप के क्वेश्चंस मैं बिल्कुल पूछ सकता हूँ। So link these things to constitution, है ना, link these things to article 19। okay, right.
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, And व्हाट so विल यू मेरी जो मूवी थी that was particularly about sustainable development goals, like sustainability, not any particular goal. एसडीजीज पढ़ लेना सारे, Hmm. सारे एसडीजीज पढ़ लेना सारे, बिकॉज लिटरली इफ दे कैन आस्क, मुझे Like इंडिपेंडेंस all लेके अभी तक 17, should I सारे, remember with numbers? व्हाट So should I remember all या 17 with या numbers? या इफ दे कैन आस्क यू इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट से लेके आज तक का सारा प्रेसिडेंट का नाम, दे कैन आस्क यू सारे 17 एसडीजीज बताओ, ठीक है? Hmm. ऑर्डर में Okay. नहीं पता हो चलो ठीक है एक बार को, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ एन आंसर, प्रॉपर आंसर, थोड़ा बहुत फंबल होगा चलेगा, बट हाँ, ओके। Hmm. नो पॉवर्टी And जीरो sir, हंगर बताते 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 बताते, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ अंडर वाटर, ये सब सब ऐसे लगातार आपको बताना पड़ेगा। हाँ जी सर। And sir, एक चीज़ और, like I have economics as well, although I'm from humanities, but I have economics. And in 12th, I was the subject topper of economics, and I also had a competition wherein like I had to act as the finance minister and prepare the union budget, and I got first position in that. So like उससे related यूनियन budgets, बजट आर्टिकल बताओ, 112 व्हाट इज इट कॉल्ड देयर? annual financial statement. ठीक है, यूनियन बजट आपको पता है कि प्रेजेंट कब किया जाता है? Uh, Sir, it is presented in the budget session of the When? parliament, When? which is, I think, held in February. यस। व्हाट इज द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंट होता है? So the finance minister presents it like he or she carries it in a. There's a thing before this also, which is presented. Sir, I'm not able to recall. Like बजट the के एक दिन economic. पहले मैं बता देता हूँ। हाँ, बोलो बोलो बोलो। मेरे को याद नहीं आ रहा. Is it economic survey or? यस, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर करता है, बजट कौन प्रिपेयर करता है, बजट के लिए कौन कौन से बिल पास होते हैं। बजट पहले रेड एनवलप में एक आता था फाइल में, अब टैब पे Hmm. आने लगा, तो टैब पे कब आया पहला, है ना? देयर वाज अ बजट फोकसिंग ऑन वुमेन, तो पिंक एनवलप आया था। Pink व्हेन में डिड आया दैट था, हैपन? right. When did that happen? Who is the current chief economic advisor of India? Questions like this will come. Okay. Hmm. And sir, फाइनेंस, कुछ और economic फाइनेंस specific पूछ फाइनेंस सकते हैं. हाँ सोच रहा हूँ मैं। फाइनेंस दिस दिस थिंग क्या नाम क्यों बोल रहा हूँ, फाइनेंस कमीशन के बारे Commission. में पढ़ लो, फाइनेंस कमीशन हाँ. के बारे में पूछ पढ़ लो, ठीक है? एवरीथिंग बजट से रिलेटेड सब कुछ, बिल्स, फाइनेंस बिल, मनी बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, तीनों बिल्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इंटरिम बजट कब आता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम बजट एंड अ नॉर्मल बजट, ओके, थिंग्स Hmm. लाइक दिस। इस साल इंडिया में बजट में सबसे ज्यादा एलोकेशन किस सेक्टर में गया है, तो दैट्स अ जेनरिक आंसर, हर साल डिफरेंस होता है, तो यू कैन जस्ट लिटरली Defense. आंसर दैट, और नंबर याद रख लेना। आई थिंक इट्स 5 लाख करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, Hmm. ठीक है। सर इकोनॉमिक स्पेसिफिक कुछ और भी पूछ सकते हैं क्या? लाइक सिंस नॉट जस्ट दिस, एज आई सेड आई वाज आल्सो द सब्जेक्ट या ऑफ. दे कैन आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चंस, जैसे एनआईए थोड़ा बहुत पूछ लेंगे, थोड़ा इकोनॉमिक हिस्ट्री पूछ लेंगे अबाउट, दे कैन आस्क यू अबाउट नीति आयोग, दे कैन आस्क यू अबाउट प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, द लास्ट प्लानिंग कमीशन, थिंग्स लाइक दिस, ओके। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सर. गुड नाइट। यस यश, यू कैन आस्क। सर जैसे मैंने जैक भरा था तो उसमें मैंने जैक का प्रोसीजर, आर्मी के बारे में एंड आस्पा वगैरह पढ़ लिया, और कुछ पढ़ने की जरूरत है? जैग में आफ्ता पढ़ लिया आपने, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए ना सारे, 33, हाँ 34, 35, हाँ। तीनों याद है ना एकदम प्रॉपरली? ठीक है। 33, 34, 35 वेरी आर्मी स्पेसिफिक आर्टिकल्स, दीज थ्री आर। मार्शल लॉ वाला आर्टिकल है, एक्सेप्शन है 33 में, ये पढ़ लेना। और रीड अबाउट द आर्मी एक्ट, थोड़ा ये सब जो एक्ट्स हैं इनके बारे में पढ़ लो। सारे कमांड, सारे कमांड्स के बारे में पढ़ लो, नॉर्दर्न कमांड, जो कमांड अंडमान निकोबार में कंबाइंड कमांड है उसके बारे में पढ़ लो। रीड अबाउट द रैंक्स, रीड अबाउट दिस थिंग, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के का पोस्ट कब क्रिएट हुआ था, फर्स्ट कौन था, करंट कौन है, ठीक है?
रीड अबाउट डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पढ़ लो, ठीक है। Okay. डिफेंस एज अ सब्जेक्ट कम्स इन अंडर यूनियन लिस्ट, ये पता होना चाहिए ऑब्वियसली। जैग के जैग पे बहुत अच्छे से रिसर्च करना कि जैग करता क्या है, ठीक है, प्रॉपरली। ठीक है। ओके, आई थिंक हाँ दैट्स इट। मुझसे ज्यादा तो क्या पूछेंगे, आई डोंट थिंक मुझसे ज्यादा कुछ पूछेंगे। दे माइट आस्क योर ओपिनियन ऑन सर्टेन डिफेंस रिलेटेड थिंग्स, okay, they might ask your opinion on attacks, they might ask your opinion on these surgical strikes, so they can ask opinion on these things, but उससे ज्यादा नहीं जाएंगे because again, although JAG you have mentioned, but still it's still a law entrance का ना interview, so they will try to ask questions which are linking defense and law। ओके, ठीक। सो थिंक ऑफ एवरीथिंग कि डिफेंस और लॉ में कहाँ कहाँ ओवरलैप हो सकता है, उन सबको सोचकर उन सब पे रिसर्च कर लेना है। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, okay, I'll end the session then। I'll put the recording in like time लगेगा because this literally is 1 hour 55 minutes now, so I will end the session right now। I'll upload the recording on YouTube, and best of luck all of you for your interviews। I hope you nail it। just दो चीजें याद रखना, take pauses while speaking, do not haste, and do not hesitate in saying if you don't know the answer, ठीक है, fumble नहीं करना है। First is this। Second, you have to be very articulate of about what you are saying, and you have to be very very patient with your answers। Do not hurry up, do not try to speak quickly so that बस बोलना है तो कुछ भी बोल रहे हैं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, it's okay to not know answer of a question। it is not okay to faff। don't faff, they will catch up if you are faffing, and you will be out of the race। झूठ मत बोलना, गलत आंसर फैफ मत करना। इफ देर आस्किंग अ क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आंसर है, ऑब्जेक्टिव आंसर में फैफ मत करना। जस्ट टेल देम either you don't know the answer and you are really sorry about that, or just tell them you have some idea, you are not sure of the answer, but you have some idea and would like to attempt and answer the question। Get their permission। if they say okay, attempt answering the question, go ahead and try and answer that question, right? Best of luck to all of you। Chalo, take care everyone, good night। Thank you. Bye.